हमने नेशनल इनकम में लास्ट टर्न पर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स चाहे कंजम्पशन के हों, हाउस होल्ड से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो अथवा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन सबको हम इन टोटल काउंट करते हैं ये देखने के लिए कि एक्सपेंडिचर बेसिस पर नेशनल इनकम जो अराइव होती है वो और इनकम मेथड पर जो कैलकुलेट की जाती है उसका इक्विवेलेंट पार्ट है या नहीं। क्योंकि एनएएस के रूल के हिसाब से ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्विवेलेंट होता है। इस मेथड में हम ये कोशिश करते हैं जिसको वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है वो आउटपुट मेथड भी है, इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में हम मेनली प्रोडक्शन आउटपुट जो होती है उस प्रोडक्शन आउटपुट के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या नेशनल इनकम इस मेथड से जो इवेलुएट होकर आती है वो उसी इक्विवेलेंस के फॉर्मूले में अकॉर्डिंग एज नेशनल अकाउंट सिस्टम प्रिंसिपल है अथवा नहीं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इसे, आई रिपीट, gross national income, that is income method, then gross national expenditure method, and gross national product, that is output method, the income arrived should be equivalent. Now, how we start with this method in fundamental as well as in calculation? You see on the top here it is written VO. Now VO stands for value of output, and this is always on market price. It is always on market price, whether it is written in the formula or not written. Now what we do, we take the sale of the products and add to it the change in stock that can be written in short form as delta stock, which is always calculated by the closing and minus opening of the stock. Wherever you find the stock change, whether expenditure method or value added method, you have always to work out closing minus opening. The numerical figure may be in negative value or in positive value, but it can never be written as opening minus closing. It will always remain as closing minus opening. Now this method gives us the value of output. Whatever in question, if the sale is given, the stock is added, and we arrive on the value of output, which is always on market price. It can be written as, you can see on the board, value of output, market price, or it can be written as the value of output. It is one and the same. Now, when we further proceed, then we come across the different types of sale. Here it is written, the sale includes DS. DS means the domestic sale. Now what is domestic sale? Domestic sale means the sale of the products in economic territory or in domestic territory. That is called as the domestic sale. Now, we also sell out some of our products to different countries, and that is known as exports. So, if export is added to domestic sale, then we arrive at the aggregate sale. So, if sale is given in a question and export is also given, the export has not to be added. Please note, export is not to be added. But if domestic sale is given in the question and the exports are given,
then it has to be added to arrive at aggregate sale. Now, this is related to the value of output. But we have to find out how we come across the value added. Value added means in every step of process, we have to find out how much value is actually added in process of production. So how it can be? Now come across with the second concept. You see on the board just below the sale, it is NFC. That is the non-factor cost. That is the cost of the producer on non-factor inputs. The factor inputs you very well remember. It is the land, labor, capital, entrepreneur. And here it is written non-factor cost. That is the cost incurred by the producer, जो खर्च करता है वो, लेकिन किस पर करता है? Non-factor inputs. अब non-factor inputs में क्या आता है? तो non-factor inputs में include होता है cost of intermediate goods, fuel, and if these two things are not given in a question, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो एक फर्म जो दूसरी फर्म से परचेज करती है वो भी नॉन फैक्टर इनपुट माना जाता है. तो इन सबको मिला के एक टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ए कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जस्ट टू रिमाइंड यू what you have studied in separate chapter, final goods and intermediate goods, those goods which can be resold, reprocessed, intermediate goods. तो intermediate goods की value हम value of output से subtract करते हैं, उसे उसमें से घटा देते हैं. फिर देखिए नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब है नॉन फैक्टर कॉस्ट. अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है, फ्यूल है, परचेज ऑफ फर्म्स है, एंड समटाइम्स इफ नथिंग इज गिवन इंपोर्ट आल्सो. तो इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं. अब जो हम निकालते हैं एग्रीगेट वो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी. इसको शॉर्ट में कहते हैं GVAMP. नाउ हाउ टू फाइंड इट आउट? नाउ दिस इज इक्वल टू the value of output. Here you can see the value of output VO minus intermediate consumption. Minus intermediate consumption. अगर intermediate consumption की value हम इस output से निकाल दें तो हमें जो aggregate मिलता है वो aggregate कहलाता है value added, but it is gross. G for gross, VA for value added, and market price. Now after this, when we proceed further, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको निकालना है net value added market price. Now N stands for net. This stands for value. A stands for added, net value added market price. Now this should be equal to gross value added market price. Now you compare. जो आपने पढ़ा है change of conversions of aggregates, तो उसे आप compare कीजिए. Value added and value added is the same. Market price and market price is same. There is a difference of gross and net. So here is minus depreciation. So we will come across the net value added MP. Now if you have to find out the net value added factor cost, then what you have to do? The net value added market price. Again you can compare the net value added, this is factor cost and market price.
So difference of these two will be here the minus NIT. When we arrive at net vector cost, now question arises how it will account to GDP as well as NDP. So let us have a demonstration here. You can see that the gross value added of primary sector plus gross value added of secondary sector plus gross value added of tertiary sector. Now this will give you GDP NP. Now please note, if in a numerical question the sectors are not given, अगर sectors उसमें नहीं दिए हैं, then the gross value added itself is GDP NP, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर वो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें इन तीनों को ऐड करके करना पड़ेगा. इसके बाद आप जब नेशनल इनकम चेंज करेंगे तो द फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज NNPFC is equal to net value added MP. Now here you know these are the two net values, and factor cost, which is minus NIT, as far as this concern of the national product, it is plus NFI. इसको नोट कर लीजिए सब, और ये आपका कहलाता है आउटपुट मेथड, और it is known as also the value added method. This you can confirm.